Hello and welcome to another session of MCQ topic sets class 11. इन पिछले सेशन में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए थे from the same topic and those were very interested MCQ questions. And in today's session also we are going to discuss few of the very important type and questions both. So our first question is S is a set such that it contains all real numbers where x is greater than equals to 0 and it satisfies this equation. Now here I'll take two cases because we have a modulus function root x minus 3. So here the case will be your x belongs to 0 to 9 and the second case will say that x belongs to 9 to infinity. अब देखते हैं इसमें हमें क्या सॉल्यूशंस मिलते हैं. So when your x belongs to 0 to 9, your modulus of root x minus 3, it will become 3 minus root x. Or I may write it like this, negative of root x minus 3. So it will give me 3 times of 3 minus root x. So this equation will change to twice of 3 minus root x plus x minus 6 root x plus 6 is equals to 0. Now let me simplify it. 6 minus 2 root x plus x minus 6 root x plus 6 is equals to 0. So it gives you x minus 8 root x plus 12 is equals to 0. This is my equation, and in this equation I'll put root x is equals to t. So this will give me x is equals to t square. So the equation will change to t square minus 8t plus 12 is equals to 0. Now I can factorize it. Minus 6t minus 2t plus 12 is equals to 0. So this will give you t minus 6 and t minus 2 is equals to 0. So that means I'll get root x is equals to 6 and root x is equals to 2. That gives you x is equals to 36 and x is equals to 4. Fine. But this x is equals to 36 is not valid. Reason we have x belongs to 0 to 9. Fine. So from this case, I have got the solution x is equals to 4. Now let's take the second case when your x belongs to 9 to infinity. Your magnitude of modulus of root x minus 3, it is equals to root x minus 3. So the equation will change to twice of root x minus 3 plus x minus 6 root x plus 6 is equals to 0. So this will give me 2 root x minus 6 plus x minus 6 root x plus 6 is equals to 0. So I'll get the equation x minus 4 root x is equals to 0. And from here I'll get root x, I'll take common, I'll get root x minus 4 is equals to 0. Fine. So this root x minus 4 is equals to 0. I'll get the solution root x is equals to 0 and root x is equals to 4.
So this will give me x is equals to 0, which is again not valid in this case. So I'll get x is equals to 16. Fine. So the two solutions I have for the value of x, that is 4 and 16. These are the two valid solutions. So the answer for this question is that this S will contain exactly two elements. And what are those? 4 and 16. This is your S. Okay, let's move on to the second question. Two finite sets M and N have M and N elements. The total number of subsets of the first set, तो फर्स्ट सेट के जो सबसेट्स होंगे 2 raised to the power m होंगे, is 48 more than the total number of subsets of the second set. So that means second set का हमारे total number of subsets 2 raised to the power n हुए, तो difference यहाँ आपको कितना given है 48. So I can take this 2 raised to the power n common, so I'll get 2 raised to the power m minus n minus 1. This 48 I can write 16 3s are 48. So this 2 raised to the power n is equals to 2 raised to the power m minus n minus 1. So I can write it like this, 2 raised to the power 4 into 3 I can write 4 minus 1. That is 2 raised to the power n into 2 raised to the power m minus n minus 1 is equals to 2 raised to the power 4 into 2 raised to the power 2 minus 1. So this n, it is equals to 4 and m minus n, it is equals to 2. So since I know the value of n is 4, so this m will come out to be 6. So m is 6, n is 4. We have this C option is the correct one. 6 and 4 are the values of m and n. Let's take another set, another equation, another question. X is a set. It contains the elements which satisfy this equation. 4 raised to the power n minus 3 raised to the power 3n minus 1. And your n belongs to natural number. Fine. So if I'll take n is equals to 1, this is what? This is x. This will give me x. For n is equals to 1, what I'll have? 4 minus 3 minus 1, that is 0. Fine. So ये 0 जो है, it is an element of x. After this, if I'll put n is equals to 2, so I'll get 4 square is 16 minus 6 minus 1, so it is 9. Fine. If I'll put n is equals to 3, 64 minus 9 minus 1. So it is 54. Fine. So what I observed here is that I have got the multiples of 9. What does it mean? This 4 raised to the power n minus 3n minus 1, it contains multiples of 9. What it is a multiple of 9. For n belongs to n. Fine. For natural numbers, it is a multiple of 9. So here this 4 raised to the power n, I can write it in a way 1 plus NC1 3 plus NC2 3 square and so on. At the end, NCN 3 raised to the power n minus 3n minus 1. So this 1 and 1 will get cancelled. NC1 is n, so this 3n and this will get cancelled. So what I'll get? NC2 3 square
NC3, 3 cube, and so on. At the end, I'll be having NCN 3 raised to the power n. Fine. अब देखिए यहां से आई कैन टेक 9 कॉमन और मुझे क्या मिल जाएगा NC2 प्लस NC3 into 3 and so on NCN into 3 raised to the power n minus 2. ये पार्ट आपको मिला. So from here what we can conclude that this your 4 raised to the power n minus 3n minus 1 is a multiple of 9. Fine. For n greater than equals to 2. Fine, because वहां हमें 0 मिल रहा है 1 पर. So for n greater than equals to 2, it is a multiple of 9. Fine. So from here what we can say that this x contains elements which are multiples of 9 and clearly अगर आप यहाँ y set देखते हो तो y contains your multiples of 9 only. Fine. So what we can conclude from here that your x is a subset of y. Fine. तो x हमारे पास जो है वो y का क्या है सबसेट है. Fine. So these were two very interesting and important questions. Next हमारे पास एक बहुत important type आती है competitive exams में, that is numerical type और integer type questions, जिसके answers हमें integers की form में या numericals की form में मिलेंगे. So let's take the first question. बड़े direct questions हैं ये आपके पास कि A contains elements 1, 2, 3, 4. A में हमारे पास 4 elements हैं. Then the total number of subsets of A is 2 raised to the power 4. हमारे पास एक थ्योरम होता है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे 2 raised to the power n होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास if we have A with the elements 1, 2, 3, 1 to 5, then the number of subsets of power set of A. तो देखिए ये जो पावर सेट ऑफ ए होगा इसमें क्या होंगे ए के सबसेट्स. तो ए के सबसेट्स कितने हुए 2 raised to the power 3. अब 2 raised to the power 3 that is 8. अब एक सेट है हमारे पास जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में क्या एलिमेंट्स होंगे 2 raised to the power 8. 2 raised to the power 8 that is 256. Fine. I hope everybody has understood this question. Set A contains the element 1, 2. दो elements हैं हमारे set A में. Then number of elements in the power set of A. Power set of A में क्या होंगे A के सारे subsets. A के subsets कितने होंगे 2 raised to the power 2 that is 4. Next we have A is equals to 5. The number of elements in power set of A. तो power set of A में number of elements कितना होगा भाई 5 है means it is a null set, it contains no element, तो 2 raised to the power 0 हमारे क्या होंगे उसके सबसेट that is 1. तो 5 का एक सबसेट 5 itself होगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. तो प्रॉपर सबसेट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n minus 1. तो यहाँ आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं. So the number of proper subsets is 2 raised to the power 3 minus 1, that is 8 minus 1, 7. Next we have S is a set with 10 elements and A is equals to x comma y such that xy belongs to S and x is not equals to y. Fine. ध्यान से सुनिए हमारा जो सेट S है उसमें 10 एलिमेंट्स हैं और A जो है आपके पास इट कंटेन्स द ऑर्डर्ड पेयर x, y और दोनों के दोनों x, y जो आपके पास होंगे दे विल कम फ्रॉम द सेट. वो कौन से सेट से आपको मिलेंगे फ्रॉम द सेट S ओनली एंड x is not equals to y. Then the number of elements in
A, it is given by 10p2. फाइन, ये हमें क्या मिलेगा? 10p2 मिलेगा एंड इफ यू विल सिंप्लीफाई इट यू आर गोइंग टू गेट 90. फाइन, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 2 is 8 फैक्टोरियल. सॉल्व करोगे तो 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट. 10 9 से 90. देखिए सेट एस के अंदर 10 एलिमेंट थे और जो हमारे पास A है उसमें ऑर्डर्ड पेयर x, y है और x और y दोनों किससे मिलेगा? मुझे सेट S से मिलेगा. तो यहां अगर रिपीटिशन हमारा अलाउड होता, क्योंकि इसने कहा x is not equals to y, तो इन दैट केस मतलब मेरे पास सेम एलिमेंट x, x नहीं होगा. तो उस केस में हम परम्यूटेशन लगा सकते थे. आउट ऑफ 2 एलिमेंट्स आई हैव टू अरेंज 10 एलिमेंट्स, आई हैव टू अरेंज 2 एट अ टाइम. फाइन. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग 9 सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू 9. तो आपको इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं जिसमें कम से कम हमारा एक ऑड नंबर हो. तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके जो हमें मिलेंगे वो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 raised to the power 9, ये टोटल सबसेट्स हुए, minus 2 raised to the power 4, minus 2 raised to the power 4. अब ये 2 raised to the power 4 क्या किया हमने? यहाँ देखिए हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं वो है 2 4 6 8, 4 इवन नंबर्स हैं. तो इन 4 इवन नंबर्स से हमें कितने सबसेट्स मिलेंगे? 2 raised to the power 4. फाइन. और अगर आपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से ये इवन नंबर्स वाले सबसेट्स आपने माइनस कर दिए जिसमें सारे के सारे इवन नंबर्स हैं आपके, सो यू आर गोइंग टू गेट दोज सबसेट्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन ऑड नंबर. फाइन, व्हिच कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑड नंबर. सो इट came out to be 512 minus 16 which is equals to 496. सो इन दिस वे आज हमने बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए और एक नई फॉर्म करी जिसे हम कह रहे हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे. फाइन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग solving these questions with me, and in the next session we will come up with bulk of questions from the same topic and a very important topic. एक बहुत important questions का set हमारे पास होता है जिन्हें हम word problems, जिसे हम कहते हैं actual application of sets. फाइन, और वो क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं. तो नेक्स्ट टाइम हम उन्हें डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे पुराने एग्जामिनेशन से. फाइन, सो टिल देन कीप ऑन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स whenever you get the time. Thank you very much.